किसी और भी प्रोफेशन में हो, आप तो समझते ही होंगे कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, राइट? एंड why this skill is important? Because sales is all about communication, right? Communication. And hi Adarsh, good evening and thank you for joining the stream. And if you have any questions, please put it in chat box. Hi Rashmi, you can keep asking questions. Platform has certain limitations, but yes, I will answer all your queries and questions. Nikhil, welcome and good evening to all of you. ठंड है, काफी चल रही है और कोविड भी चल रहा है, सो आई होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टेइंग नेगेटिव, यू नो, एवरीबॉडी सेज स्टे पॉजिटिव, आई एम सेइंग प्लीज स्टे नेगेटिव, सो नेगेटिव रहिए और खुश रहिए, राइट? है नवीन, हर्षित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? आप सब लोग एंड सेल्स प्रोफेशनल, जब मैं कहता हूं कि आप सेल्स प्रोफेशनल के लिए ये है, सो फॉर मी एवरीवन इज इन सेल्स, राइट? एवरीबॉडी इज इन सेल्स. एंड व्हाई एवरीबॉडी इज इन सेल्स? बिकॉज व्हाई एवरीवन इज इन सेल्स? वी आर ऑल इन सेल्स बिकॉज वी सेल समथिंग टू अदर, राइट? सेल्स का मतलब खाली प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना नहीं होता है. सेल्स का मतलब आपकी आइडिया दूसरे व्यक्ति को बेचना, राइट? इफ यू आर अ स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन और आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ओनर हो, तो अपने टीम को अपनी आइडिया बेचना, राइट? अपने टीम को अपनी आइडिया बेचना इज ऑल्सो, राइट, इज ऑल्सो अ सेल्स, राइट? एंड द रीजन व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, राइट? हम खाली प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं बेचते हैं, we also sell our ideas, we also sell our aspiration to others, right? So hope आप स्क्रीन देख पा रहे हो and the screen is live to you. Yes, wonderful. So why communication is important and सेल्स वालों के लिए क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है? एंड वी आर ऑल इन सेल्स, सो दिस प्रोग्राम इज डेफिनेटली फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर पीपल इन सेल्स, बट एक छोटा बच्चा भी बचपन से ही सेल्समैन बन जाता है. आपको पता है कैसे? क्योंकि वो घर में सबको सेल्स करते रहता है, राइट? लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि बच्चा सबको सेल करते रहता है. उसको कुछ चाहिए होता है तो घर के सारे टारगेट ऑडियंस देख लेता है और कौन सा सबसे गलीबल मेंबर है उसके पास जाके अपना काम कर लेता है, तो वो सेल्स ही है, राइट? बट कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन सेल्स? बिकॉज वी कम्युनिकेट बाय वेरियस मीन्स, राइट? वी कम्युनिकेट बाय वेरियस मीन्स एंड कम्युनिकेशन इज बाय 5 ways, है ना? पहले हम सुनते हैं, राइट? एज यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ एंड यू आर वॉचिंग वीडियो ऑल्सो, राइट? सो आप सुन के कम्युनिकेशन करते हो, राइट? सुन के वी कैन कम्युनिकेट, है ना? कहीं से बैंड, यहाँ आप ऑफिस में बैठे हो या घर पे बैठे हो और बाहर से बैंड जा रहा है, सो आपको कुछ बैंड की धुन सुनाई आती है और आपको कम्युनिकेट हो जाता है कि कोई तो दूल्हा घोड़े पे बैठ के नाचते हुए जा रहा है शादी के लिए, राइट? दूसरा, वी कम्युनिकेट बाय सीइंग, देख के, है ना? और देख के हम लोग, बहुत सारे लोग देख के ज्यादा सीखते हैं, राइट? या देख के ज्यादा समझ पाते हैं. तीसरा आता है टेस्ट, है ना? अगर आपको मैं कुछ मीठा खाने के लिए दे दूं, आपकी आंख अगर बंद है और आपको कोई बताएगा भी नहीं कुछ क्या है, तो भी आप समझ जाओगे कुछ मीठा खा रहे हो. स्मेल से भी कम्युनिकेट करते हैं. अगर आप किसी बेकरी के बाजू से जा रहे हो, किसी बिस्किट फैक्ट्री के बाजू से जा रहे हो, आप देखना बिना बोले ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है बेकरी से, गरम गरम पाव निकल रहे हैं या बिस्किट्स निकल रहे हैं या कुकीज निकल रहे हैं, एंड आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आसपास कहीं बेकरी है. वी ऑल्सो कम्युनिकेट बाय टच, राइट? आप अगर देखोगे राइट शेक हैंड, अच्छा शेक हैंड, या अपने दोस्त के कंधे पे रखा हुआ एम्पैथी वाला हाथ बहुत सारी चीजें बयां कर जाता है, कम्युनिकेट कर जाता है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, राइट? तो ये 5 चीजें जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, राइट? दीज आर द 5 ways वेयर वी, हम जिससे कम्युनिकेट करते हैं. एंड सेल्स में अगर हम लोग देखने जाए,
if we are into sales, and अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, राइट? भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और भगवान ने हमको 1 मुंह दिया है, राइट? और हमको इसको प्रोपोर्शनेटली ही इस्तेमाल करना है. बट द बिगेस्ट मिस्टेक सेल्स पर्सन और सेल्स प्रोफेशनल मेक इज दे स्पीक मोर एंड लिसन लेस, राइट? अगर आप देखोगे तो 7% कम्युनिकेशन में इट इज ओनली 7% विच इज words are important. Yeah? The tone is 38%. The importance of tone, right tone is 38%, and body language is close to 55%, right? And that is the reason why many people are struggling nowadays post pandemic, जब हमारा sales process shift हो गया है physical से digital पे. Because if I keep my camera off, I don't know what other person is doing or thinking, or I won't get any non-verbal clues. है ना? Body language से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, लेकिन कैमरा ऑफ कर दिया तो क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा. And then we struggle. But at that time, जब हमको body language नहीं समझ में आ रही है, non-verbal clues नहीं मिल रहे हैं हमको, then what is the another way where we can do a lot of good communication, good impact on the potential customer, right? So there comes verbal communication. और verbal communication में this proportion is very important, right? 2 ears and 1 mouth. और sales people by default बहुत ज्यादा बोलते हैं. उनको लगता है मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा ना तो कस्टमर को मौका ही नहीं दूंगा. But it should be the other way around. हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा हमने सुनना चाहिए, rather double, right? उससे ज्यादा हमने सुनना चाहिए. Why? Because listening is a skill. Communication is important, but the most important skill in communication is listening. And the moment we listen a lot, right, you will understand your customers better. You will understand other person better, right? Nikhil is saying we have 2 years because we need to listen more than we speak. Absolutely, right? But ये होता नहीं है. You need to develop this skill. Listening is of 3 types. Listening is of 3 types. What are these 3 types? Listen to just listen. You are driving a car and you are playing a music. Radio चल रहा है, गाना सुन रहे हो, and you are listening. Sometimes you just want to forget everything and you just want to listen to the tune. You don't know what words they are, right? So that doesn't mean कि क्या हो रहा है. बस गाना सुनते हो, गाड़ी चला रहे हो. या while driving बाजू से एक हॉर्न जाता है, आप फोन पे बात कर रहे हो ऑफिस के लिए, राइट? और बाजू से गाड़ी जाती है, आवाज करती है, लेकिन आप सुनते हो लेकिन उसको इग्नोर कर देते हो. Second one is listen to reply. 80% of the people are in the second category. We listen to reply. Those who are married, they have mastered the art of listen to reply. And they also mastered the art of listen to ignore, right? सुनते हैं जवाब देने के लिए. हम बॉस को सुनते हैं जवाब देने के लिए, राइट? हम कस्टमर को सुनते हैं जवाब देने के लिए. हमारे पास जवाब तुरंत तैयार होता है. कस्टमर कहना कुछ चाहता है, कस्टमर कुछ बोलता है, एंड वी रिप्लाई. और इतना इंस्टेंट होता है कि हमें समझ में भी नहीं आता है. एंड थर्ड इज लिसन टू अंडरस्टैंड एंड देन रिप्लाई. लिसन टू अंडरस्टैंड एंड देन रिप्लाई. अगर हम किसी के कम्युनिकेशन को, किसी की बातों को समझने के लिए सुनेंगे और बाद में उसके ऊपर जवाब देंगे या बाद में उसके ऊपर क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछेंगे, then the other person will feel that yes, this person is interested in me, what I am telling. He is listening to me to understand what my real pain is, right? And the moment you do that, you create trust within your customer's mind. You create trust in your customer's mind. Friends, this active listening to understand and then reply is a skill which can be learned and which can be mastered. Good salespeople, good sales professionals are active listeners. I'm going to tell you one story which happened a few years back while I was working with Hershey's. And हम लोग मार्केट करते थे. आई गॉट अ टीम, मेरे पास में आई गॉट अ बिग टीम.
यू नो। सो हम लोग मार्केट कर रहे थे, तो हम लोग रिटेल शॉप में जाते थे, और रिटेल शॉप में जाते थे, दिस पीपल, रिटेल ओनर्स, वो लोग उनको लगता था कि बॉस आया है, आई यूज्ड टू गो विथ माय टीम, तो वो लड़के लेके जाते थे, हमारे बॉस आए आज, एंड वो बोलते थे अच्छा 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 बॉस आ गए, तो मतलब आप बेचने की कोशिश करोगे मुझे कुछ ना कुछ, लेकिन बॉस आया है तो मैं तो लूंगा ही नहीं आज। क्यों? क्योंकि आप तो 6-8 महीने में, साल भरे में एक बार आओगे हमारे पास में, राइट। तो हम वो दुकान में गए, वो मेरा जो टीम मेंबर था वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था, ये भी लीजिए वो भी लीजिए, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। तो दुकानदार बोले देखिए साहब, आप तो साल में एक बार आओगे, 6 महीने में एक बार आओगे, आपके पास तो इतना बड़ा मार्केट है, आप अगली बार जब आओगे ना, आप अगली बार जब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल विजिट टू माय शॉप, दैट टाइम आई विल बाय इट फ्रॉम यू, फॉर यू, राइट। तो वी सेड ओके नो प्रॉब्लम, तो बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तब आपसे ले लूंगा। एंड देन वी वेंट ऑन डूइंग द मार्केट, वी डिड 30-35 रिटेल काउंटर्स, एंड उसके बाद आई सेड टू माय सेल्समैन, राइट, लेट्स गो बैक टू दैट स्टोर जिसने हमको बोला था कि आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तब मैं आपसे बाय करूंगा। गाय सेड कि अभी फिर से जाएंगे, बट यस बिल्कुल जाएंगे, एंड लेट अस सी हाउ द सेल हैपेंस। वी वेंट अगेन टू दैट रिटेल शॉप, एंड ही सेड अच्छा अरे वाह साहब, आज फिर से कैसे आ गए आप? मैं बोला आपने बोला था ना कि नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे तब आपसे परचेस करूंगा करके। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड आप बहुत चतुर हो, है ना, आपने मेरी बातों को पकड़ लिया। मैं बोला आपने ये थोड़ी कहा था कि नेक्स्ट टाइम मतलब आज ही नेक्स्ट टाइम, या 4 महीने बाद, या अगली बार, अगली विजिट में। सो दिस इज माय नेक्स्ट विजिट, आई केम अगेन टू योर शॉप, right? So these are the small why I could use this, because I listened to him, right? So listening is a ability, listening is a skill, active listening is a skill, and we should develop that. The moment we develop active listening, the moment we start asking right questions, the moment you start listening, you will start asking right questions. And what are those right questions? Right? I call them as 5W1H, 5 wives, 1 husband. And these are the questions we should ask our customers. Why we need to ask these questions? Because the moment we start asking them questions, right questions, we start to understand our customers better. They start giving you replies better, right? And these can be open-ended questions or close-ended questions, right? What, when, where, how, and why, right? So these are the open-ended, these can be open-ended questions or close-ended questions. And a great sales professional will ask these questions empty number of times. You can ask probing questions, you can ask open-ended questions, you can ask close-ended questions, right? You can ask inspirational questions and you can ask leading questions. ये सारे सवाल आप कस्टमर को पूछ सकते हो, और ये अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे पूछते हो ना, बिफोर द एट द स्टार्ट ऑफ द सेल्स कॉल, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स बेटर। आपको पता है सेल्स प्रोफेशनल्स को ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करने के लिए और क्लोजिंग करने के लिए बहुत बार डर लगता है कि अरे ऑब्जेक्शंस आएंगे, निगोशिएट करना पड़ेगा, देन क्लोजिंग रहेगा, कस्टमर विल आस्क फॉर डिस्काउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी कैन डू इज यू शुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आप जो भी कंपनी में हो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू to create a question bank regarding your product and regarding your customer persona. आपके जो कस्टमर्स है वो क्या क्या सवाल आपको पूछ सकते हैं, इसकी आप एक लिस्ट बनाइए, राइट? और वो सवाल आपको पूछे इससे पहले ही आप सवाल बना के कस्टमर को ही पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू डू अ कॉल, राइट, व्हेन जब हम लोग कॉल करने के लिए जाते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं, नॉट अबाउट सास प्रोडक्ट्स, राइट, they sell differently and they have got a different communication mechanism altogether. but जब हम प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं, सो कस्टमर्स क्या पूछ सकते हैं हमको, है ना, कस्टमर का ऑब्जेक्शन कहाँ पे आता है, या सेल्स क्लोज होने से क्यों रुक जाता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है।
हम सारा सेल्स कॉल कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन दे देते हैं, सारे ऑब्जेक्शन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं और ऐसा लगता है कि अभी हाँ हमारा सेल क्लोज हो जाएगा और कस्टमर हमें कहता है सर आई विल हैव टू आस्क माय पार्टनर। नाउ इफ आई एम अ गुड सेल्स प्रोफेशनल, अगर मैं अच्छा सेल्स प्रोफेशनल हूं, व्हाट आई विल डू एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉल, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, जब मैं कस्टमर से पहली बार मिला था, बात कर रहा था, दैट टाइम आई कुड आस्क्ड हिम सर are you a partnership firm or a proprietorship firm? And if he says yes, we are a partnership firm, then we should have asked him logically कि सर हमने डिसीजन कौन लेता है आपके यहाँ पे, आप लेते हो या आपके पार्टनर लेते हो, right? Now what happens the moment you ask these questions, he will say no no no, मैं सारे डिसीजन लेता हूँ, वो मार्केटिंग देखता है, वो सेल्स देखता है, वो बाहर की चीजें देखता है, अंदर की चीजें सारी मैं देखता हूँ, या नो वी टेक डिसीजंस म्यूचुअली। सो द मोमेंट ही सेज कि नहीं मेरा पार्टनर भी इन्वॉल्व रहता है डिसीजन मेकिंग में, देन यू कैन से सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई एम गोइंग टू मीट यू फॉर द डेमो, कैन यू प्लीज ask your partner to be there in the discussion so that we can close the loop then and there itself, right? ये सारी प्रोसेस करने के बाद में अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है तो देन इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज एवरीबडी इज शॉर्ट ऑफ टाइम, right? Everybody is short of time, everybody is pressed for their targets. Sales is all about numbers guys, जब तक आपका sales close नहीं होगा ना, number में add नहीं होगा, and sales is the only profession which brings revenue within the organization, right? Which brings all the revenue to the company, right? So these techniques will help you a lot, these techniques will help you a lot when at the start of the call itself, अगर ये स्टार्ट में आप सारी कर लोगे ना, ये सारी चीजें जितने सवाल पूछने डायग्नोज करने के लिए आपको बता सकता है, एंड यू विल हैव लेसर नंबर ऑफ डेड एंड कॉल्स और फ्रस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ द कॉल, और आपको ऑब्जेक्शंस कम आएंगे, राइट? सो एक मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा, बिकॉज आई गिव दिस टिप टू ऑल माय in all my sessions, in all my sales training programs, create a question bank. Create a question bank कि कस्टमर आपको क्या सवाल पूछ सकता है, और वो सवाल की काउंटर क्वेश्चन पहली बना के रखिए. सो व्हेन यू गो फॉर ओपनिंग अ कॉल, और जब पहली बार मिलने के लिए जाते हो कस्टमर को, यू शुड आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस टू योर पोटेंशियल कस्टमर. इससे होगा क्या, है ना? मैं कहता हूं, आपको पता है महाभारत आपने सुना होगा, राइट? महाभारत में क्या था, अर्जुन जो थे, अर्जुन के पास अलग अलग टाइप के तीर थे, राइट? अलग अलग टाइप के तीर थे. तो अर्जुन करते क्या थे, अर्जुन के पास में तीर बहुत सारे थे. अब वो आगे का अपोनेंट देखता था और उसके हिसाब से तीर चलाता था. सबके लिए ब्रह्मास्त्र लेके नहीं चलाया उसने, सबके लिए ब्रह्मास्त्र लेके सबको ब्रह्मास्त्र से नहीं मारते थे, राइट? तो जैसा दुश्मन वैसा अस्त्र. तो हमें ये सवालों की लिस्ट बना के रखनी है. वी नीड टू क्रिएट दिस लिस्ट. एक बार ये लिस्ट बना के रखेंगे तो हमें इस लिस्ट के ऊपर में से हमारे पास में बहुत सारे तीर रहेंगे. तो जैसा कस्टमर वैसा तीर, राइट? तो होगा क्या, यू विल नॉट मिस आउट. और एक क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे आपकी बनती जाएगी. जैसे जैसे क्वेश्चन बैंक बनती जाएगी ना, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन आस्किंग क्वेश्चंस. वन मोर थिंग, कम्युनिकेशन में आफ्टर आस्किंग क्वेश्चंस टेक अ पॉज, टेक अ पॉज. जब कस्टमर रिप्लाई करता है, लिसन टू हिम एक्टिवली, लिसन टू हिम एक्टिवली and keep silent. The moment customer start answering you, start understanding him. और जब वो खत्म कर देगा ना, उसके बाद भी don't start again with a question. You can ask your customer, sir और कुछ बताना चाहोगे आप? Would you like to say something more about this? So he will have breathing time, and also you will get some time to comprehend कि कस्टमर ने क्या क्या बोला हुआ है. You can frame your questions according to his answer, right? So you can do this, you can create, and I'll tell you, this is simple, this is simple technique जहां पे आप questions आपके प्रोडक्ट के हिसाब से बना के रख सकते हो. ओपन एंडेड questions जिसके जवाब कस्टमर कितने भी लंबे दे सकता है. सर टेल मी अबाउट योर बिजनेस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. he can tell you everything about his business, right? Sir, do you use a software for accounting or not? It is a close-ended question because the answer will be in yes or no.
Sir, do you use any CRM? Answer will be yes or no. But which CRM you use and how do you use it? है ना, क्या क्या करते हो आप CRM के अंदर में? This can be an open-ended question, probing question. अच्छा एक बात बताइए सर मुझे, ना प्रोबिंग क्या होता है? पुलिस पूछताछ करती है ना, थाने में लेके जाती है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने कहा, बताओ. Start probing, start understanding the real pain, right? Probing question. Leading question is where you want to take the conversation. जब कस्टमर के साथ आप बात कर रहे हो, certain customers are so talkative कि वो डिस्कशन हमारा भलती डायरेक्शन में जाता है. That time you can use leading questions. अच्छा सर एक बात बताइए मुझे, आप कब तक ये डील को क्लोज करना चाहते हो, राइट? सो यू हैव अगेन retract him again on the bringing him on the right track, राइट? एंड इंस्पायरिंग क्वेश्चन. अच्छा सर एक बात बताइए मुझे, आपका ये जो प्रॉब्लम है इसका अगर आपको मैं सोल्यूशन दे दूं तो आपको क्या महसूस होगा? सो यू आर इंस्पायरिंग हिम, देन ही कैन टेल यू नहीं नहीं मेरा लाइफ आसान हो जाएगा, मेरा जीएसटी आसानी से भर दूंगा मैं, मेरा हेडेक कम हो जाएगा, मेरे पेनल्टी नहीं बचे. सो ही कैन, यू कैन इंस्पायर हिम टू टेल कि व्हाट लाइफ उसका आसान कैसे होगा, राइट? सो एक क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए आप. And if you want, you can connect me on LinkedIn. You can email me. You can check out the video on YouTube. This is going to be there on YouTube again. तो आप वो देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक बना सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो. If you need any help on this, do get connected with me and I'll help you, right? And I'm going to answer all the questions. Do you suggest any good book to learn sales better? There are plenty of books, Rashmi, on sales. You can learn. Start with a simple read, which is on sales. You can start reading Zig Ziglar's book, right? Zig Ziglar. You can read his books. There are plenty of books he has written on sales. Sales is a dreaded word, but mark my word, friends. Sales is again very simple because it is human, है ना? Sales हम लोगों के साथ ही करते हैं, है ना? We sell to humans, we don't sell to machine, right? And this is the only profession which cannot be machine learning या AI से you cannot do sales. You can predict, but ultimately you require people at both the ends. Or either basically one end, right? अगर आप SaaS प्रोडक्ट भी बेचते हो तो अदर एंड पे इंसान ही उसको परचेज करता है, राइट? एंड व्हेन देयर आर पीपल, व्हेन देयर आर ह्यूमंस, दे आर बाउंड टू हैव इमोशंस. अगर इमोशंस है, सो यू कैन टॉक, you can understand their emotions. So Zig Ziglar के बुक है, right? Then you can Grant Cardone है, right? And there are plenty of other books, but you can start with Zig Ziglar, तो Zig Ziglar के बहुत अच्छे बुक्स है. You can start reading them and you will understand how sales, and these principles have not changed since so many decades. तो बेसिक जो सेल्स के प्रिंसिपल्स है वो अभी भी बदले नहीं है, right? Nikhil is asking, what is a good process you suggest for sales teams that involves packaging material? So Nikhil, if you can elaborate more on what sales process you are looking for, then and what packaging material, I will surely reply over here. But sales processes will get developed over a period of time, है ना? पहले टीम आएगी, बाद में processes आएंगे, right? Because processes are dynamic. Systems and processes for any organization are dynamic. What is working for what system or process which is working good for a team of 10 will not necessarily be working good for a team of 50 or 100, right? So systems and processes will get evolved every now and then. The moment you start growing, systems and processes will get evolved, right? But at least 3 things should be identified in systems and processes. First and most important thing is what they need to do. System of delegating them the goals. What is been expected from them. First thing, right? So that they understand what is the thing which is expected from me. Second is
they should have all the product knowledge. Third, there should be a system to capture all leads, and there should be a turnaround time decided कि lead आने के बाद में within how much time, same day, 24 hours, 48 hours आप reply करोगे, right? कौन मिलेगा? If your product is packaging, printing material, and if you need to go to factories and meet the customers, कितने दिन में मिलेंगे? कब हम उनसे डिटेल्स लेंगे, राइट? कब हम उनको कोटेशन भेजेंगे? कब उनके मेजरमेंट साइजेस, बिकॉज पैकेजिंग मटेरियल डिफर्स फ्रॉम स्मॉल पाउच टू बिग बैग्स, राइट? सो ये सारे डिटेल्स कौन लेगा? हु विल do all the designing, who will send the quotation, who will do the follow up, who will go and meet the customer, and who will close the sales, right? इनका follow up कब कब हुआ, कौन कौन करेगा? These are the basic steps you should have. Once the deal is closed, sales is not up to, sales close तब नहीं होता है जब आपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया. आप जिस दिन उसको प्रोडक्ट या सर्विस आपकी सेल करते हो, उसके बाद में वो रिलेशनशिप स्टार्ट होती है. एंड दैट इज द टाइम वेयर इन यू कैन create relationship and nurture that relationship to a extent जहां पे सेल्स पर्सन उस कस्टमर के साथ में कनेक्टेड रहेगा, उसको जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है क्या उसके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखेगा, और वो देखने के बाद में he will create relationship, he will ask for referrals, he will try to upsell, cross sell, right? So that customer retain करके रखे, हम लोग बना के रखे हमारे साथ में, प्लस उसका हम लोग उसके रिलेशनशिप के कारण हमको और ज्यादा फायदा हो. सो सेल्स इज नॉट अबाउट क्लोजिंग अ डील, बट इट इज अगेन maintaining the relationship, nurturing the relationship, and taking benefit of that relationship in a mutual way, right? So systems and processes will be developed over a period of time, जैसे जैसे आपका टीम रहेगा, but basic चीजें बेसिक है. गोल्स होने चाहिए, रिव्यू सिस्टम होनी चाहिए आपकी, कि रोज सुबह मीटिंग होगी 5 मिनट की या 10 मिनट की, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टुडे, व्हाट इज द लार्जर पिक्चर फॉर द वीक एंड मंथ. उसके बाद में व्हाट आर द लीड्स व्हिच आर इन पाइपलाइन, कौन से पाइपलाइन में है, कौन से क्लोजर की तरफ है, किसको कोटेशन भेजना है, किसको डिजाइन फाइनल करना है, किसका अप्रूवल लेना है, किसका परचेस ऑर्डर लेना है, राइट? डिफाइन टीम फॉर दैट, एंड क्लोज होने के बाद में वी विल डू द सर्विसिंग, एंड after sales service में who will take care of that customer, right? We are business that deals, give me more, packaging material. One question: while when hiring for a salesperson, what do we look for? Krupa, and what question do you ask for? Ask to test the applicant. We are packaging material traders based in Bangalore and Karnataka. We want to sell the companies that need brown boxes, tapes, packaging materials, right? So Nikhil, before I come to Krupa, Nikhil, I would say, see, what you are selling is an important thing. Brown boxes and tapes and packaging material. I think because of, thanks to COVID, thanks to COVID, लोगों का परसेप्शन अबाउट हाइजीन हैज चेंज्ड, राइट? पहले जो कुछ चीजें लोग प्लास्टिक की पन्नी में, दे यूज्ड टू टेक कैरी एनीथिंग, नाउ पीपल वांट एवरीथिंग शुड बी पैक्ड नीटली एंड इन अ हाइजीनिक वे, राइट? सो you can sell to these guys, you can sell B2B, and you can sell to SMEs also. Mark my word, nobody is tapping this aggressively. I have seen many industries which want bulk orders, but I can assure you, I'm giving you this idea. You can try, you can get back to me. If you try, test it, and then if you can get results out of it, come back to me. I'm going to tell you one thing which can give you consistent leads for your business, and that is every city has got wonderful foodie groups, right? These are the foodie clubs, and they have a number of foodie people who are small business owners, and they start their home businesses, right? And at that time उनके पास में इतना बजट नहीं होता है कि बल्क में प्रोक्योर करें, राइट? बल्क में दे कैन नॉट प्रोक्योर. सो आप क्या कर सकते हो? create nice articles, create nice designs, and go and join those clubs on Facebook. You will not find them on LinkedIn, but yes, Facebook, you can go and join all those groups. So if you are in Karnataka,
So all the cities, major cities in South, everybody will have their own food club, right? So you can have Bangalore foodies. If you go and search on, if you can go and search on Facebook, let us see. We will do a live thing on searching this. Give me a moment. So if you can go and search on Facebook food groups. Yes, so give me a moment. I'll share my screen. Yeah. So if you can see, I'm searching this now. Are you able to see? Yes. So as you can see, there are plenty of groups, Bangalore food groups, right? You can click any of them, see all, and they will have thousands and thousands of members, right? Indian Recipe Foodies, Bangalore Foodie Club. Bangalore Foodie Club has got 196,000 members, right? Food manufacturer group. Join these groups and start promoting your product over there. Mark my word, friend, you will have a number of requests for your product, and you will generate lot many leads for this. And understand your customer in what stage they are. Either they are in startups or all this, and then you can customize your proposal for them. I'll tell you another thing, because I have my own business which is of beverages. We have started this few years back. और जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास में भी यही डाउट था कि इतनी बड़ी क्वांटिटी हम कैसे परचेज करें. सो व्हाट वी यूज्ड टू टेल आवर वेंडर कि आप है ना, जो चीज 2 रुपए में बोल रहे हो इतने सारे लेने के लिए, आप 3 रुपए ले लो, लेकिन क्वांटिटी कम दो मुझे, बिकॉज आई एम ट्राइंग आउट, आई एम टेस्टिंग आउट, एंड दिस नोबडी डज, है ना. बट fortunately that vendor understood. I told him that, see, if you help me right now, I'll not go anywhere else, right? So he agreed, and now I trust him more than anything, right? मैं कितने लोग अभी मेरे पास में आते हैं, people come to me to sell their product, but I'm still with him. Why? Because I know in my initial phase he has helped me, and this is the beauty of human to human selling. We are not machines, right? Some percentage of people will get drifted, but that's okay. So this is the mountain on which, there are plenty of food manufacturers over here in Bangalore. Food club 196,000. There must be at least 10,000 people who are either into business or aspiring to start their own business, right? So you can focus on this also. Although the revenue will be less, size will be less for the orders, but mark my word, they will do publicity for you. They will do a lot of publicity for you, right? And all these Facebook groups are active. I'm part of I'm a part of Nagpur Foodies Club. I'm from Nagpur. So they have 76,000 people, right? And a single post of mine, they will not allow you to promote your product directly. So you have to be very tactful while promoting your product. Do not directly promote. Create a post, find your friend within the group and tell him to post for you. So if you have a friend in the same group, tell him that this is my product. Yeah, please post kara de. I have bought so and so bottles and wonderful things from him. Quality is excellent, service is excellent. Please post it for me, right? And you can put that thing. That it will work wonders for you. Sales is simple. If you target right customer persona, you will get right quality leads. And why it is important to generate quality leads? Because then your half the work is done. Inbound leads are easier to convert, right, than going and approaching people. So you can do this for any of the field you are into. I have given you the example of food.
but this can be replicated to any of the business you are. See, there are plenty of groups available on Facebook. So use that wisely. Use those for your business wisely, right? So do that, and mark my word. If you if you if you can check top 20 cities in each state, right? So Karnataka top 20 cities, Tamil Nadu top 20 cities, Kerala top 10 cities, and your Andhra. So why? Because sometimes logistic cost is a bit on a higher side. So it should be feasible also to send your material to other states or not. But I think you can start with Karnataka itself, and you can start doing this. Even if you can join 20 foodie clubs, right? Or 20 entrepreneur clubs, you will have insane amount of data. You can do data mining on that, right? And you can generate a number of leads. About systems and processes, I'm again telling you, that was your question initially, is systems and processes will get developed over a period of time. And this is a dynamic process. These will, they should keep evolving every now and then, right? And coming back to Krupa, when hiring for a salesperson, what do you look for, right? So give me a moment. I'll share a slide with you, and then probably you will get answer on that. Give me a moment. I'm going to open a slide for you. Are you still there or no? Are you still there or no? Kripa? Okay. Wonderful. We are going again sharing. I'm going in a screen sharing mode. Yes. So these are the 4 things you should do before hiring a salesperson. What? First and foremost thing, define their roles. Why do you want to have that salesperson? Have a clear-cut definition of their roles, what they will do, right? What they will do, what are their job responsibilities, what is expected from them, right, in detail. Second is responsibilities. What are they accountable for? What are they expected to deliver? Create a job profile. You know, either you are a startup or a single person company, or you are a solopreneur. Whenever you want to employ anyone, whenever you want to onboard anyone, answer yourself these 4 questions, right? What he will deliver, what is he responsible for, what is his role, what he will do, what are the 10 things he will do, right? Third is evaluation process. On what things I will evaluate him, and what is the criteria of evaluation, है ना? वो सारे कस्टमर को मिलके आ गया cannot be a criteria, evaluation criteria. उसका closure percentage कितना होना चाहिए? If I get 30 leads, he meet with all 30 prospects and could not able to close a single, then although he is meeting with all the 30 people, but then we need to look whether this guy is wrong, or our offering is wrong, or whether we are going in wrong direction, right? So that needs to be understood. And the most important thing is attitude. Sales is all about attitude. Sales is the only profession where people start listening to no from morning till the last call of the day. You know, it is sometimes very heartening. इतने negativity से surrounded रहते लोग, right, within sales, because they listen to so many no's every day, and that is why attitude matters. Why attitude matters? Because attitude is one thing which will keep that person inspired every day. Motivation is like bathing, and I this is my favorite quote, right? Motivation is like bathing. You need to bath twice a day, right? वैसे ही अगर if I go on YouTube and listen to an excellent motivational video, right? I'll do this, I'll do that, nothing can beat you and all that stuff. I'll get motivated.
And if I go and start listening to no from customer, and then if I lose my motivation and I don't work again, what is the point of that motivation? But a great person, a salesperson with great attitude will be self-motivated, rather inspired. Self-motivation is what? Inspired. He will be self-inspired. He will be inspired all the time. It doesn't matter. Customer says no to him, he will try again. Right? So attitude is one great trait person should look for. First thing. Second thing. Second is the best quality is communication skill. Sales is all about communication. So look for good communicators. And how to find good communicators? By checking whether they are good listeners or not. They are active listeners or not. Right? So if they are active listeners, they are good communicators. Right? So that you can do. So if you don't have any friend in that group, you can start posting subtly. You can start posting subtly. So when you join a group, there are rules and regulations which are posted in every group. So sometimes every group will have certain threads or links. So these links are made for that only, wherein you can promote your business but not in their main timeline or feed, right? So you can use that. So understand their rules, right? Understand their rules. But I think Facebook की दुनिया is so big that when you join a group, you will come to know कोई तो पहचान का है वहाँ पे, right? But even if it is not there, you don't sell directly. So there are n number of ways where you can promote your product without being salesy, right? You can put a photo of a beautiful box, packaging box, and you can write, today I have experimented with my new design team and we have come up with this beautiful box. Friends, please let me know what do you think about this box, and what do you think that can add value to this box so that I can sell to my customers. So you are not selling to the group, you are asking them for something. And when you ask someone for help, people always oblige. Right? People always oblige. Right? So wonderful, guys. Thank you so much for joining me. I'm going to do another session in next month, February. I'm going to do 2 sessions as and when my time permits. But if you're listening to me and if you want any help from me, do get back to me. You can connect to me on my Facebook page. You can connect to me on my LinkedIn page. And if you want to create this questionnaire, create this question list and come back to me, and we can take it further. So let's see, and all the very best. I hope these small tips will help you a lot. So thank you for joining in for today's session. It was amazing. I planned it for 30 minutes. It is now 41 minutes. So if you have any questions, keep posting it, keep connected. All the very best. And thank you for actively listening. Bye-bye.